Hi. So today we'll discuss about some interesting question like ଜଣେ ପିଲା ପଚାରିଛି କମେଣ୍ଟରେ ସୋ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସଲ୍ଭ କରୁଛେ ତାର ସଲ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ବାହାର କରୁଛେ। ସୋ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଉ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନକୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିକି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ରୁଟ୍ ବାହାର କରିଥାଉ। So we'll proceed actually direct question को proceed करिवा and question is like ଯେତେବେଳେ ବି root ର ମାନ जो मूଳ ବାହାରିବ ମୂଳର ମାନ ଯଦି ରିଏଲ୍ ରୁଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କି ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଛି ଫର୍ମୁଲା କି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା that is if the roots are like m1 plus m1 or m2 m3 something like this then what is like the formula is like y is equals to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x something like that. But in case of complex if the root is ଯଦି root ଯଦି ଯୋଉ auxiliary equation ର root ଯଦି ଆମକୁ complex number ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଯୋଉ complementary function ର value କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ଆମେ କେମିତି ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କସ୍କୁ ସେଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ real number are a special kind of means if imaginary part is zero then the complex number is converted into the real number. Okay so ଆମେ discuss କରିବା then ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ actually କ'ଣ ହେଉଛି। okay so this is the question d2y by dx square plus 4dy by dx plus 5y is equals to 0 we are taking this ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡିନାରୀ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ୟାର ସଲ୍ଭ କରିବା ୟାକୁ କ'ଣ ହେବ। ଓକେ ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ auxiliary equation no differential it's basically equation एटा गोटे differential equation अछि सो आमे याकू auxiliary equation रे परिणत करिवा। auxiliary equation को केमिति परिणत करा जाय that is like some approximation like d by dx को आमे कोन नै थाउ m नै थाउ similarly d2 by dx square याकू कोन ना यार स्क्वायर एक्चुअली ये जो ऑर्डर रे जहाँ भी थाए ये m रो स्क्वायर हे जाए डिग्री बनी जाए एंड सिंपली y is equals to 1 आमे टेक नै थाउ देन कोन हे जिवो सो बेसिकली y is equals to 1 पुट करी कि d2 by dx स्क्वायर जगह रे आमे पुट करि परिबा m स्क्वायर प्लस 4 into y जगह रे एठी 1 पुट करिबा एंड d by dx जगह रे आमे जदी m पुट करिबा प्लस 5 into 1 that is 5 is equals to 0 this is the auxiliary equation। এই auxiliary equation को सॉल्व करले हमें कोन पाइबा ना m is equals to हमें जानि जे जो गुटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करियार फार्मूला कोन ना -b plus or minus root over of b square minus 4ac divided by 2a if the formula is like ax square plus bx plus c is equals to 0 जदि हमको गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो फॉर्म एमिति जणा अछि x होची एठी वेरिएबल सिमिलरली एई केस रे ऊपर केस रे एठी m होची वेरिएबल एंड x स्क्वायर सहित कोएफिशिएंट जे भी मल्टीप्लाई हेकी अछि तार ना ताको जदि a कहिबा x सहित जे भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हेकी अछि with sign it's basically b and constant positive constant is basically c then the formula for root finding the root is basically m is equals to minus b plus or minus root over of b square minus 4ac divided by 2a so এই ভଳି স্টেপ রে আমি যদি বাহার করিবা এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন को এই অক্সিলারি ইকুয়েশন को তারে কোন হবো so m is equals to minus b जगह रे कोन अछि only 4 plus or minus root over of b square that is 16 minus 4 into a जगह रे 1 and c जगह रे 5 मु जस्ट कंपेयर करछि दुईटा इक्वेशन को कंपेयर करली एंड ए बी सी रो मान एठी पुट करछि 2 into a जगह रे 1 so -4 plus or minus root over of 16 minus 20 divided by 2 that is -4 plus or minus root over of -4 divided by 2 which is equals to -4 plus or minus root over of -4 को हमें लिखि परिबा root over of 4 into root over of -1 that is root over of mn
is equals to, we can write like root over of m and root over of n. So minus 4 को मु भांगी देली 4 into minus 1, so 4 into minus 1, so separate करि परिबे, is equals to 2, is equals to minus so basically yeah, root over of 4 रो मान केते ना 2 and root over of minus 1, complex in complex number आगको पढ़िबो तमरो थर्ड सेमिस्टर बा फोर्थ सेमिस्टर रे अछि complex analysis. ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रे कोन कहूची ना ऑलरेडी तमे आई थिंक या सहित अवेयर अछो बिकॉज 11th क्लास 11th रे आमे पढ़ी जे कॉम्प्लेक्स नंबर विषय रे टिके टिके. सो रूट ओवर -1 को आमे आयोटा बोली कहि थाउ, जाको आई लेटर रे आमे डिनोट करथौ. ओके, सो आई, सो रूट ओवर -1 को मेठी आई सिंबल रे नोट करिवि एंड डिवाइड बाय 2. सो कैंसिल हला परे ऊपर तळ कोन रहिबो -2 प्लस और माइनस 2i. सो दिस इज द फाइनल. ओके, सो m रो वैल्यू कोन आसिला -2 प्लस और माइनस 2 into आयटा. ओके, दिस इज द रूट. सो बेसिकली आमे जानि छे कोन ना जदी रूट, इफ रूट्स आर डिफरेंट, एक्चुअली कोन आमे जेहेतु ये कॉम्प्लेक्स रूट आसी होजी, ये कॉम्प्लेक्स जेहेतु ये कॉम्प्लेक्स रूट आमे या ପାଇଁ कि गोटे स्पेशल फॉर्मूला कहितले कि कोन होबो फॉर्मूला ना y इज इक्वल्स टू जदी जदी कोन हुए ना एटा ए फॉर्मूला जगह इन जनरल जदी कोन हुए ना सम अल्फा प्लस और माइनस आयोटा इनटू बीटा, এই ভଳିয়া যদি কিছু কমপ্লেক্স রুট আসে, দ্যাট মিন্স এইটি দুইটা রুট আছে না, গোটে হচ্ছে আলফা প্লস আয়োটা বিটা, ইয়ে গোটে রুট, সিমিলারলি আউ গোটে হচ্ছে আলফা মাইনাস আয়োটা বিটা, ये गोटे रूट ये गोटे रूट. सो दुईटा टोटाल मूल वर्ग मूल अच्छी, दैट मीन्स एक्चुअली जदि यही भाया फॉर्म रे थाए अल्फा प्लस और माइनस आयोटा बीटा, देन द फॉर्मूला इज लाइक कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन इज समथिंग लाइक e to the power alpha, that is real root. Alpha is the real root and beta is the imaginary root. Beta is the imaginary root. एक्चुअली आमे एठी साइन को आमे कंसीडर करूने, प्लस और माइनस साइन को आमे कंसीडर करूने, जस्ट यार पॉजिटिव वाला अल्फा पार्ट, यार अल्फा पार्ट या भीतर साइन इंक्लूड अछि. ओके, सो एठी बीटा पार्ट, अल्फा इज द रियल रूट and beta is the imaginary part, sorry not root, it's basically a real part of z or m कहि परिबा. ओके, similarly this is the imaginary part of m. Okay, so e to the power real part of m, that is alpha into x whole into c1 cos into beta x, that is imaginary part of m. Similarly c2 plus c2 into sin of beta into x, आमे ये फॉर्मूला टा कहितले ना, बट एक्चुअली फॉर्मूला ये होचे इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट इन केस ऑफ रियल रूट्स एक्चुअली स्टूडेंट रो क्वेश्चन कोन थिला कि आमे कॉम्प्लेक्स सहित एते जडित नुहे, दैट मीन्स एटी को एक्चुअली साइन एंड कोसाइन टर्म कोठु आसुची, कोन या को आमे प्रूव करि परिबा, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम एक्चुअली. रियल रियल रे आमे कोन जानथिले कि जदी जो m रो मानो समथिंग लाइक m1 m2 m3 सम डिफरेंट डिफरेंट जदि रियल रूट्स आसे, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करिला बेले आमे ऑक्सिलरी इक्वेशन को प्रथमे बाहर करिबा ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड जेते बेले m रो मान बाहर करिबा सेतरे दुईटा तीनटा गोटे जेतेटा भी रूट बाहरिबो m1 m2 m3 इन जनरल नेम देली, जदि ए भलिया डिफरेंट रूट्स आसे, दैट मीन्स y कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन लो मान कोन हबो c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x, something like that ongoing. Okay, आमे एटारु आमे भी प्रोसीड करि परिबा, आमे एई फार्मूला को यूज करिबा एंड एई फार्मूला रे आमे फाइनली पहुंची जिबा केमिति देखिबा. I am just taking an example like this is the example, no? The roots is this is the root -2 plus or minus 2 iota. Okay,
m इज इक्वल्स टू -2 प्लस और माइनस 2 आटा ये हूँ कम्प्लेक्स रूट या को कौन करी ना ताले m रो मान प्रथम मान हूँ ये दुईटा मान अच्छे m हूँ गोटे प्लस गोटे जदि प्लस बेले नवा ताले सेटा m1 रूट हो जोटा कि आम -2 प्लस 2 आटा सिमिलरली m2 is then another different root that is -2 iota okay now जदि या आम जो आम रियल रूट बेले पढ़ी जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला को आम जदि अप्लाई करवा देखिबा ताले कौन हो okay so y complementary function is equals to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x जेहेतु ये दुटा दुटा अलग अलग रूट because there is a positive sign is here there is a negative sign is here okay so c1 e to the power m1 जगह -2 plus 2 iota into whole into x plus c2 e to the power okay I think कईठी गोटे कोटे तो mistake sorry yeah actually 18 mistake है so 2 cancel ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି only 1 ରହିବ that's a not a big problem actually calculating calculation कला बेले actually बेले बेले mistake हुए so जो imaginary part सेटा होची 1 एटी imaginary part टा होची 1 okay hmm. okay so this is 1 this is 1 this is 1 that means only iota is here okay only iota e to the power जोटी जोटी जदि -2 जोटी अच्छी से 1 लिखिपर ओके इमेजिनरी पार्ट रे एंड -2 माइनस आयोटा होल इनटू एक्स या जिते आम एक्सपांड करवा एक्चुअली या जिते आम एक्सपांड करवा आम इन जनरल पढ़े कौन जदि दुईटा अलग अलग रूट हुए ताले आम एमती कम्प्लीमेंटारी फंक्शन को लिखिपर सो या जिते आम एक्सपेंड करवा कौन हम ना c1 इंटू e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर आयोटा x लिखिपर ना नहीं सिमिलरली प्लस c2 into e to the power -2x into e to the power minus iota x याको भी सेमिति लिखियो ओके सो याको जतले हमें कोन करबा ना e to the power -2x is common e to the power -2x get common and c1 e to the power iota x plus c2 e to the power minus iota x is equals to e to the -2x c1 into आमे जेहेतु जानी जे कॉम्प्लेक्स नंबर आमे पढ़ी जे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर read like e to the power Euler theorem e to the power iota theta is equals to like we can expand the exponential function imaginary part of the exponential function like cos theta plus iota in the series combination of cos and cosine and sine term there is a imaginary term is also here okay, cos theta plus iota sine theta so c1 similarly एठी आमे कोन एक्सपेंड करके लिखि परिबा e to the power iota x so cos x plus iota sin x plus c2 into cos x minus iota sin x ओके e to the power iota theta रो फार्मूला एटा e to the power minus iota theta रो फार्मूला कोन हे जो जस्ट cos theta minus iota sin theta तो क्वेश्चन आसियो कि सर एठी हमें माइनस लगेले तो एठी माइनस आसिला काहे कि लेफ्ट साइड मीन्स cos थीटा रो कोएफिशिएंट माइनस काहे कि हला नै इट्स बेसिकली जहां जोटी जोटी हमें थीटा थिला जोटी जोटी हमें थीटा पकेइथिले सेठी जेठी हमें कोन पुट करले माइनस थीटा सो cos ऑफ माइनस थीटा रो वैल्यू कोन हे जो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा इनटू sin ऑफ माइनस थीटा so cos of minus theta value cos theta because it's a even function and sin of minus theta value कौन है जो minus sin theta है जो so for that reason actually there is a negative sign is here
minus iota sin theta. The sine function is a odd function. And similarly, this is the even function. Okay. Okay, so e to the power minus 2x and c1 cos x plus iota into c1 sin x plus c2 cos x minus iota into c2 sin x. एबे कौन करिवा e to the power minus 2x whole into जेठी जेठी cos वाला टर्म अछि ताको आबे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हमें cos x को कॉमन नहीं जावा सो c1 plus c2 similarly plus sin x get common and iota c1 minus iota c2. So now it is in the form like we are discussing for the case of complex number. If the roots are in form of a complex number, then it's like e to the minus 2x. So c1 plus c2 is another constant. We are denoting like some different constant like a b c d. See in differential equation constant ର କିଛି value ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ just ତମେ କିଛି ବି note କରିପାରିବ ମୁଁ ଏଠି c1 into cos ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି एठी जेमिति c1 मु देछि के एमिति a भी दे परियो a into e to the power m1x plus this is a notation basically b into e to the power m2x plus c into e to the power m3x एमिति भी के notation दे परियो that's not a big issue. So हमें याको स्पेशल नोटेशन दे परिबा कि c1 मन करो एटा 2 एटा 3 सो 2 plus 3 के कोन हबो गोटे कांस्टेंट ही ना हबो गोटे कांस्टेंट ही ना हबो वेरिएबल तो ही परिबोनी सो ताको गोटे अनदर कांस्टेंट हमें a नाम दे देबा देन a into cos x plus similarly this is also a constant I c1 गोटे कांस्टेंट similarly I c2 गोटे कांस्टेंट एमान को जते बेले हमें सबट्रैक्ट कर देबा देन आउ गोटे कांस्टेंट आसी जिवो जहा को हमें नै देबा b v sin x. ओके सो एबे बुझा पड़ला सेम फॉर्म देखो आम जदि कंपेयर करिवा एठी भी सही सेम फॉर्म थिला ना e टू द पावर अल्फा x याको जदि हमें एठू जदि हमें डायरेक्ट लिखिबा e टू द पावर अल्फा जगह कोन अछि -2 into x plus c1 into cos of beta into x beta is basically here 1 that means only x plus c2 into sin x. Only difference is like एठी हमें c1 and c2 नोटेट करूचे बट एठी हमें a and b नोटेशन दउचे मु आगर भी कहि देछि कि कांस्टेंट रो किछि एठी किछि सेमति किछि बहुत बेसी तमर कोन कंट्रीब्यूशन नाही बेसिकली वेरिएबल जदि डिफरेंट ही था दैट मींस एठी जदि मु -2x आसी एठी जदि मोर आसी था एठी -3x देन ए पड़ देखि ए प्रोसीजर रे हमें पाई पर न था एक्चुअली जो स्पेशल फॉर्मूला एटा होचे गोटे स्पेशल फॉर्मूला y कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन जो आमे एटा कथा कहिलु एटा गोटे स्पेशल फॉर्मूला. ओके सो आई थिंक जहाँ भी डाउट थिला बुझे थिबो जार न भी थिला से भी मे बी भल भाव रे बुझी पारथिबो सो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन तुम निजे दे ट्राई करि परिबो d2y by dx square minus 4 dy by dx plus 4 is equals to 0 and second question is like d2y by dx square plus 4 dy by dx plus 4 is equals to 0. दुईटा डिफरेंशियल इक्वेशन अछि जते बेले तुम सॉल्व करिवो देखिवो एई डिफरेंशियल इक्वेशन को जते बेले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बाहर करिवा एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन हे जिवो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड यार जते बेले रूट बाहर करिवो कोन हे जिवो ये m माइनस 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 दुईटा सारा सेम रूट आसी जिवो पुणी सेम रूट पई कि भी सेम कंडीशन तुम अप्लाई करि परिबो ओके एठी भी सेमिति जेतले तुम याकू सॉल्व करिवो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0
ब्रीफ आइडिया खाली दे दूसरी m+2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दैट implies m इज इक्वल्स टू सॉरी बेसिकली माइनस ओके एटी केस रे हमें -2 एतिकी ना हबो माइनस b इज -4 प्लस or minus root over b square that is 16 minus 4 into 16 yeah ओके देन ये दुईटा केस रे हमें कौन पाउचे ना ओनली रियल रूट पाउचे बट रियल रूट सिना किंतु सेम रूट हमें इन जनरल फॉर्मूला पढ़थिले कहा पई ना डिफरेंट रूट पई फॉर डिफरेंट रूट हमें पढ़थिले y कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस similarly ongoing होतला but if same roots are there for example this same root या जदि समान रूट हो ताहले आमे कौन करथिले ना तार फॉर्मूला आमे डिजाइन एमिति करथिले कि c1 जदि मन करो दुईटा सेम रूट अछि दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m रो मान गोटे होची m1 गोटे होची m2 ओनली टू रूट्स आर देयर देन c1 प्लस c2x होल इनटू e टू द पावर m into x because m is equals to m1 m is equals to m2 सो एटी आमे m1 भी प्लेस कर परिबा m2 भी प्लेस कर परिबा बा इन जनरल m भी प्लेस कर परिबा बिकॉज़ बोथ आर सेम एक्चुअली ओके सो ए जो स्पेशल फार्मूला ये भी गोटे स्पेशल फार्मूला सो ए स्पेशल फार्मूला को भी आमे ए फार्मूला रु डिराइव कर परिबा तुम निजे ट्राई करिवो न होले कमेंट सेक्शन रे जणाइबो निश्चित भाबे हम सॉल्व करि देबे आशा करथि वीडियोटा भल लागिछि एंड जदि भल लागिछि ताले तुम सामान को सहित शेयर कर परिबो थैंक यू।